Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hरि बोल, जोर से बोलो, बोलो. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radhe. Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Jai Gauranita, Jai Gauranita. Jai Gaurari, Jai Gaurari. Gaura, Gaura, Gaurari. Gaura, Gaura, Gaurari. Nitai Gauranga Gaurari.
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Vishwapad Paramahansa Pravachan Sutra Sathis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Everybody founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ राधा कुंठाम कुंडगिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जाय, वृंददेव तुलसी महारानी की जाय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 7, chapter number 4, the verse number is 30. Tasya Daitya Vate Putras Chatvaram Param Adbhutam Rarado Abhun Mahams Tesham Gunair Mahad Upaksha Mahad Upasaka Tasvadaita Pati Putra Tasvadaita Pati Putra Chatvara Paramadbhuta Chatvara Paramadbhuta Prarado Abun Mahastesha Prarado Abun Mahamstesha Gunair Mahad Upakrasa Gunair Mahad Upasaka Tasya Daite Pati Putra Chatvara Paramadbhuta Prarado Abhun Mahamstesha Gunair Mahadupasaka Gunair Mahadupasaka.
गुणैर्महादुपासका तस्य दैतापते पुत्रास् चत्वार परमद्भुता प्ररादो अबुन्महांस्तेषाम् गुणैर्महादुपासका. Anybody else? Mothers? Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Everybody must understand the translation of the words very nicely, because it will help you to understand the importance of a devotee and the symptoms of a devotee. Tasya, of him, Hiranyakashipu, Daityapate, the king of the Daityas, Putra, sons, Chatvara, four, Param Adbhuta, very qualified and wonderful, Rarada, the one named Prahlad, Adbhuta, Abhut, was, Mahan, the greatest, Tesham, of all of them, Gunai, with transcendental qualities, Mahad Upasaka, being an unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! सोए हुआ जागो, मंदिर सोने के लिए नहीं है. Wake him up. It will be compassion. Ha 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 ha, Prabhu, जागो बाबा. अरे तो घर तो बनाया सोने के लिए, अभी यहाँ मत सो बाबा. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Hiranyakashipu had four wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Prahlad was the best. Indeed, Prahlad was the reservoir of all transcendental qualities, because he was an unalloyed devotee of the personality of Godhead. Kindly repeat after me. Hiranyakashipu had four wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Prahlad was the best. Indeed, Prahlad was a reservoir of all transcendental qualities, because he was unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead.
purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Yasasta bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunastatra samasta sura. In one who has unflinching devotional faith in Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifest. Bhagavatam 5:18-12. Prahlad Maharaj is praised herein for having all good qualities because of worshipping the Supreme Personality of Godhead. Therefore, a pure devotee who has no motives has all good qualities, material and spiritual. If one is spiritually advanced, being a staunch, liberal devotee of the Lord, all good qualities are manifest in his body. On the other hand, harau abhaktasya kuto mahad guna. If one is not a devotee, even if he has some materially good qualities, they have no value. This is the verdict of the Vedas. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmilitam Yenai Tasmai Shri Gurume Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namne. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asyat Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauraduse Namo Brahmana Devaya Go Brahmahitaya Cha Gatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kantanu Sute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shivanu Sudevi Pranamami Hari Priya. Vancha kalpatrubhyasya kripa sindhubhe vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Obeisances to all the Vaishnava devotees who are completely immersed in the pure bhakti of Krishna. By offering our obeisances to such stalwart devotees, we definitely will get purified, and while we are getting purified, we will advance in the path of spiritual life, because this association, this Sangha is the only thing which can transform you and all, me and all, and this has been happening since time immemorial. So, in the present age, it's also applicable.
Though the consciousness of the devotees in the Kali Yuga are completely averse to the spiritual advancement, because their compassion is lost, their purity is lost, their truthfulness is lost, and their cleanness is lost. The Srimad Bhagavatam starts from these four things. If these four things are lost, you cannot claim to be a Vaishnava. What to speak of those people who are indulging in killing the animals and remaining dirty and have no compassion, and in the name of religion they keep on killing? Such rascals should be slaughtered on the roads. Because as long as we keep on killing the innocent animals, we keep on killing, people in the name of religion, such rascaldom cannot last for a long time, because, they are contrary to the religious principles which is taught by Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma means Swayam, which is propagated by the Supreme Personality of Godhead. A Kaitava Dharma should be abandoned, and real Dharma has to be followed. Under the democratic rule, we may love to give respect to all the symptoms of so-called religiosity, but actually we have to see whether they are in tandem with the Srimad Bhagavad Dharma. We have seen in India there are so many dharmas sprouting. Sikh Dharma, Jain Dharma, and so on and so forth, Buddha Dharma. But just to see that we sustain in association of each other, that doesn't mean the real Dharma doesn't exist. It is existing. Only thing is, one has to pay the price. That price is austerity, truthfulness, compassion, and cleanness. And if these four things are missing in somebody, he cannot be religious. He cannot understand the higher intricacies of spiritual life. That is why the first canto of the Srimad Bhagavatam, in the conversation between Kali personified and Parikshit Maharaj, this is completely established there. So if these gunas are not coming to us, never ever think that you're closer to the devotee or devotional aspects of devotional service. So we have to evolve ourselves. You cannot be offenders, you cannot be defenders in the name of religion and keep on doing nonsense. So that's why here in this chapter we see, earlier Srila Prabhupada in the verse number 22 and 23 is very much clearly saying that everywhere, in every direction, in every heart and in every atom, the Supreme Personality of Godhead is situated in His features as Brahman and Paramatma. Then what is the purpose of looking for a direction in which we have to pray? Because Krishna is everywhere. If he's in the deity, he's in the atom. If he's in the direction, he is with the devotee. If he is actually everywhere, then why do we have to do this? So Prabhupada says, during the Hiranyakashipu's time, his influence were everywhere, but he could not force the influence into the places where Supreme Personality of Godhead had his pastimes. That means Prabhupada ji is guiding us that
There is no influence of Kali in dhams. That is why when you are going to dhams, whether it is Ayodhya dham, Vrindavan dham, Mayapur dham, you feel something different. And the difference cannot be uttered by the voice, uttered by us, because we feel there is something. That's why our devotees keep on running. Kutte jato, Pandharpur jas. Kutte jato, Vrindavan. Kutte jato, Mayapur. Huh? So this is the pastimes of the devotees. They like to all go to the dham because they feel their senses are tamed, they are focused, and their mind is equiposed. And under this situation, cleanness also comes, compassion also comes, and then so many things happen. Association also happens. So all these progressive symptoms of the spiritual life have to be found by the devotees who are really wanting to be advancing on the path of spiritual life. That's why Prabhupada ji also said that the devotees must go to dhams. And in fact, Srila Prabhupada said, once in a year, all the leaders must go to Mayapur dham, where they will converse, they will talk about, Ishta Seva, how to execute, wonderful activities in ISKCON, which is dissipating the darkness all over the globe. Because the devotees are always chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In all the directions, in every town and village, this holy name is sung by the devotees. And Prabhupada says, by reciting the Srimad Bhagavatam in every corner of the world, the effect of the Kali can be nullified. If devotees are sincerely reciting, talking about the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, then there's a possibility you can stop the influence of Kali Yuga. When it is happening in Dham, it can happen other places, and it is happening. Because the great Acharya, Srila Prabhupada, went everywhere. And you could see the influence of an Acharya who is traveling everywhere and helping people to become Krishna conscious. This is not an ordinary activity. At the end of the class, we'll tell how it is important for a devotee to travel, who is always glorifying the pastimes of Krishna. It is by their utterance, by their remembrance, by their deliverance of these super excellent pastimes of Krishna, most fallen people get purified. They get purified. And they come to the lotus feet of Krishna. Those who have lost the direction of coming to the lotus feet of Krishna, they become with direction. And thus they purify their existence on the crust of Mother Earth, wherever they are. So it is said here, in the Dhamma, there is no influence of the Kali Yuga or any demon. If one takes the shelter of such a Dham, worship of the Lord becomes very easy, and the resultant spiritual advancement quickly takes place. This is the importance of our yatras. When devotees go to the yatras, they take the flock of devotees along with them so that it will affect them. Otherwise, it's not possible. It is not possible. They don't know. But when they go to Dham, हाँ प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत सही है.
उनका मति भी सही हो जाता है। नहीं तो बॉम्बे में आ गया तो बहुत बिजी हूं, बहुत मरने के लिए फुर्सत नहीं है। मैं आप स्वामी जी, आप मंदिर के लिए आप बुलाने रहे हो, मगर मेरे को तो मरने के लिए फुर्सत नहीं है। उससे बेटर है तू मर जा, ये शास्त्र कहता है। इससे बेटर है कि तू मर जा। मगर अगर मनुष्य जीवनी में तुमने भक्ति नहीं किया, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। Just like we hear that in this human form of a life, if you are trying to accumulate riches, what is the use of those riches? It is equal to death. But in this human form of a life, if you are cultivating spiritual life, the purpose of human life is met. You see? Just because people are completely bereft of Krishna consciousness, that doesn't mean devotees don't have to propagate. They are determined on the path of divinity. They are determined to carry out the instructions of a spiritual master so that they can be compassionate. They are compassionate, that's why they're traveling. So here it is said that it is the pain of the devotees, austerities of the devotees, which help others to become better devotees. It is said that the voice of the Lord vibrates as follows: O best of learned personnel, do not fear. I wish all good fortune to you. Become my devotees by hearing and chanting. ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। श्रवण और जप करना ही इस मनुष्य जीवन का असली धर्म है। Chanting and hearing from a realized soul will make out of you a better devotee. Okay? And offering prayers, for these are certainly meant to award benediction to all the living entities. I know all about the activities of Hiranyakashipu and shall surely stop them very soon. Please wait patiently until that time comes. Who is saying this sloka? Supreme Personality of God. He's giving ashvasan to us. He's giving ashvasan in the Bhagavad Gita. He's giving ashvasan in the Bhagavatam. Yet we are not trying to become serious devotees in this lifetime. We are hankering after material things. We are not surrendering immediately. We're not surrendering and hearing Nama Rupa Guna Leela of the Supreme Personality of Godhead. We are so much attached to our sense gratification. In spite of hearing repeatedly all the time, yet the influence of Kali is so much on us that we tend to forget what is our purpose of life. जीवन के उद्देश्य को जल्दी से भूल जाते हैं। माया का एक छप्पड़ मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कृष्ण की ओर जाना है। हम माया की चप्पड़ से पूरा उसका इन्फ्लुएंस लेके घूमते रहते हैं। इसलिए जो सच्चा भक्त है वो निष्ठापूर्वक संपूर्ण रूप से गुरु के आश्रय रहते हुए अपने सभी भक्ति के सभी कार्यों को करता है और माया के इन्फ्लुएंस को दूर कर लेता है। So Prabhupada ji says, केवल भक्त ही मुझको जान सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति। प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं। In other words, the ability of understand the Supreme Personality of God or also see Him or talk with Him depends on one's advancement. हम आध्यात्मिक जीवन में कितने प्रगतिशील है, उस पर डिपेंड करता है कि ठाकुर जी आपके करीब कितने हैं। जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील नहीं है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, निष्ठा उत्पन्न नहीं होती है, सेवा में रुचि नहीं रहती है, आपके जीवन में ये देखिए कि कितना अंधकार भरा हुआ है।
इसलिए बड़े तीव्रता से, सशक्तता से, समर्पणता से हमें आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि यही असली ह्यूमन पर्पस है। अगर उस पर्पस को भूल ही जाएंगे हम, तो पशु से घिरे हुए हैं हम लोग, क्योंकि अपनी स्थिति को न समझते हुए जो व्यक्ति पशु की भांति अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है वो गिरा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के कर्तव्य को नहीं समझ सकते। Somebody is designated as an inspector in the police, and while he is given this post, if he is not executing the proper services in remaining in that post, what is the use of making him an inspector? जो कर्तव्यों से विमुख हो जाता है वो वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, या भौतिक जीवन में भी प्रगति नहीं कर सकता। That is why sometimes we even say, even, big people, so-called leaders, isn't it? The people in India, we used to say to, this, what is his name? Rajiv Gandhi's son? Rahul. So they used to even call him Papu. Why? Because not doing good work. The previous prime minister, he was not speaking. In Sri Lanka, what is the condition? What is the condition? The people who are in the authority, they are stealing the riches of the country. If they become plunderers while they are sitting on the throne, what will happen? Janta Janardhan will revolt. The same thing applies here. Those who want to become devotees, who want to see Lord face to face, they must have some qualities. And without the qualities, you cannot see Lord face to face. That is why these 4 things are required. Austerities, daya, cleanness, and truthfulness. If they are missing in your life, you are cheating yourself. You're cheating yourself. Whoever may be. He may be in a saffron, he may be in a white, he may be in any place, any situation. If they're not following the code of conduct, you are under the influence of Kali Yuga. You want to rebut this Kali Yuga? You have to chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the medicine. In the age of Kali Yuga, this is medicine which can purify your bhavarog. If you don't have taste for, taking the medicine, you can never get cured. The Lord is telling us, Sevan Mukhe Jiva Do. Engage your tongue first in the holy name of the Lord. पहला कर्तव्य है, तुम कुछ करो या नहीं करो, मंदिर आओ या नहीं आओ, किसी से मिलो या नहीं मिलो, पहले घर में बैठ के पहले जप कर। तुम बीमार है, तुम पतित है, तुम प्रमत्था है, तुम पागल है, तुम डायरेक्शन लेस है। इसलिए भगवान बोल रहा है कि तुम जहां पर भी हो, गरे थाको, बने थाको, सदा हरि बोले थाको। जहां पर भी हो तुम नाम स्मरण कर, नाम स्मरण कर, तब जाके तुम्हारी मति ठिकाने पे आएगी। नहीं तो तुम्हारी मति
पागल की जैसा है। प्रभुपाद जी बात है, भले ही तुम्हारी भौतिक अवस्थिति बहुत ही अच्छी है, भौतिक स्थिति अच्छे होने के बावजूद भी तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ा हुआ है। केवल भक्ति के द्वारा ही तुम्हारा अस्तित्व उभरेगा और तुम अच्छे भक्त बन सकते हो। इसलिए यहां पर बता, इन भक्ति देयर आर 9 different processes, and if one is not inculcating these processes in his devotional service, the progress is very bleak. Shravanam, Kirtanam. Sometimes devotees think they can stay in the offices and just run the whole thing. But कीर्तन में जिसको रुचि नहीं है वो क्या करेगा? I see one devotee, Prabhuji, comes here. He sings nice, kirtan he does in front of the Lord. He comes from outside. He has interest for doing kirtan. Sometimes we see our devotees, they come also to the temple, they sit on the staircase there. Kahe ko? They sit on the staircase, they will sit especially on the Sundays when all the congregational devotees come, they will prefer to sit in our snack bar there on the chairs. And then the brahmacharis will also sit with them. क्या कर रहे हो? मैं उसको प्रचार कर रहा हूं. अब उसकी स्थिति में जाके ब्रह्मचारी भी प्रचार कर रहा है, क्या करे? कभी समोसा खा रहा है तो कभी बटाटा वड़ा खा रहा है, कहीं ऑर्डर कर रहा है तो कोई ऑर्डर करवा रहा है. So, my dear friends, we have to really understand how we are utilizing every time, how we are utilizing. If you come to Radha Madan Mohanji's temple, utilize your time, not socializing, but only spiritualizing. Because other 6 days you are all fighting with the Maya, going to your job, taking care of your wife, taking care of your children. But one day you have decided to come to the temple, utilize everything. कुछ करने के लिए 16 मला हो गया, फिर कीर्तन करो, कीर्तन हो गया, प्रसाद वितरण करो, प्रसाद वितरण हो गया, फिर से कीर्तन करो. It is not only Hriday Madhav's responsibility to do the kirtan in the temple hall. You can join him and sit in the temple hall and do mass kirtan. And when the mass kirtan happens, even the most degraded person can be transformed. एक से अनेक कृष्ण नाम का नाद होगा तो जो भी नया व्यक्ति आएगा उसकी कानों पे ये नाम गिरेगा. नाम रूप गुण लीला. Naam is the first thing. It is so potent that it can change the lives. It changed the lives of Indians when foreigners came. Hundreds of disciples of Srila Prabhupada came. They went in the bigger cities and chanted the holy name. They were all shaven heads and everything. तो आजकल एक अच्छा स्लोगन किसी ने बना दिया, हमारी रुचि थी फटे हुए जीन पहनने के लिए. क्या? वो धोती पहन के हमको धोती पहनना सिखाए. हमारी रुचि थी फटे हुए जीन पहन के. It's become a fashion nowadays to wear the torn jeans, isn't it? And even Indians are all following this bandwagon. But Prabhupada ji brought wonderful devotees from Western countries with dhoti and kurta and shaven heads. अरे ये क्या हुआ? ये कहां से आ गए?
हमारी ललासा अभी भी है पैंट शर्ट पहनने की, उनकी ललासा पैदा हो गई गुरु के निर्देशन के प्रति, और उन्होंने अपना अटायर चेंज किया, उन्होंने धोती कुर्ता पहन लिया। मगर जब फिरंगियों ने हमको सिखा दिया तो हमारे हृदय में कुछ कुछ होने लगा, अरे ये फिरंगी धोती पहन सकता है, कुर्ता पहन सकता है, टकला हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं करूं? तो देखा देखी में भी बहुत से भक्त लोग बन गए। हम सब लोग उसी देखा देखी में ही बन गए भाई, isn't it? This is the influence of collective kirtan. Otherwise, the individual person will come and go. But if there's Madhur Kirtan happening in the temple hall from morning till evening, there is a possibility that people's heart will get changed. They will sit down. Otherwise, they go there, take the Charnamrit, go back. Huh? But if the Madhur Kirtan is happening here with all of you sitting, isn't it? Then they will also sit. देखा देखी में बहुत से भक्त बन जाते हैं. They say na, you hang one crow, other crows will be in line, isn't it? So if you all sit down, because kirtan is the pramukh anga of Navda Bhakti. And if you do that attentively, you will get purified and others will also get purified. That is what is said here. Performing kirtan, Sri Prabhupada is talking about here. Performing kirtan and hearing the vibration of sound, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Actually seeing the Supreme Personality of Godhead dancing on the tip of your tongue and seeing in front of you has got an everlasting effect on your consciousness, which may be polluted, which may be dirty, but if you sit down, it will help you to progress on the path of spiritual life. Huh? One must realize this position and then one will be able to understand the absolute nature of Lord's activities. Hriday Madhav, कितना इंपॉर्टेंस है तुमको अगर तुम कीर्तन करता रहेगा. राधा मदन मोहन जी के मंदिर में 24 hours all the time कितना भक्त बन सकता है? हजारों भक्त बन जाएगा. मधुर कीर्तन यही हमारा इस मूवमेंट का सार है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने पेड़ के नीचे कीर्तन किया. इट इज नॉट ऑप्शनल. It is not optional. It is catalyst. And one who has time, inclination, knows how to play mridanga, kartal, sit down in front of the Lord and keep on kirtan, doing kirtan all the time, and help others to hear this collective holy name, which can penetrate the ears and purify their antakaran, that they can also become wonderful devotees. Prabhupada ji did simple thing. He sat in a Tompkins Square Park and played simple kartal. Hippies came, drunkards came, dopes came, druggists came. How can you forget what your founder Acharya has done? What do you think you have a better vocabulary than him? No. You just adhere what he has taught very sincerely. Then you will be able to keep
the effect of Kali Yuga at bay, and you will emerge also a wonderful devotee on the path of devotional service and help others to become better devotees in their life. The Grihasthas, if you train themselves to eat only Krishna Prasadam, their half a journey is won. And if they stick to this process, that मुझे जीवा से जप करना है और जीवा से केवल प्रसाद पाना है, तुम्हारी सभी जीवन की अभद्राएं दूर हो जाएंगी. तुम्हें उतनी गहराई से उसमें रुचि नहीं है, मगर यही दो चीजें तुम्हारी अभद्र जीवन को सुभद्र बना सकते हैं. सुभद्र बनने के बाद में तत्व ज्ञान का शुरुआत स्वयं होगा. तुमको रुचि होगी कि मैं भगवान के लीलाओं को कैसे रसादा कर सकूं. You will be purifiedly, you will be studying the Vedic literature, and in that way you will be able to understand. Otherwise, the most materialistic person having so many degrees in his life, he finds it very difficult to read Bhagavad Gita. He finds it very difficult to read Srimad Bhagavatam, because he has not removed his abhadrata in his life. And in fact, the International Society of Krishna Consciousness, some people are giving suggestions that stop devotees going out for a preaching in an immature situations. They should be in the society for 5 to 10 years. Then they should be allowed to go and preach. Because otherwise they can become fodder of Maya so easily. So this is what is Prabhupada ji is saying here. And then we say that Yada deveshu vedeshu goshu vipreshu sadhasu dharme mai cha vidvesham sava asu vinashyati. When one is envious of the demigods who represent the Supreme Personality of Godhead of the Vedas, which give all knowledge of the cows, Brahmanas, Vaishnavas, and religious principles, and ultimately of me, the Supreme Personality of Godhead, he and his civilization will be vanquished without delay. So it is said, when Hiranyakashipu teases the great devotee Prahlad, his own son, who is peaceful and sober and who has no enemy, I shall kill Hiranyakashipu immediately, despite the benedictions of Brahma. एक वैष्णव की कितनी क्वालिफिकेशन है. भगवान स्वयं बता रहे हैं, भले ही हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वरदान भी मिला होगा, मगर अगर मेरे भक्त के प्रति उसने प्रतिहार किया है, वो खत्म हो जाएगा. Can you imagine this? This is the value of devotee. Lord is saying that if you are offending a Vaishnava, your progress can be very, very, very slow, or rather it will finish. To offend a Vaishnava is very, very great, heinous act. So that's why it is said, of all sinful activities, an offense of a pure devotee is very big offense. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is so disastrous that Sri Chaitanya Mahaprabhu has compared it to a mad elephant that enters a garden and causes a great havoc by uprooting many plants and trees. If one is an offender of a lotus feet of a Brahmana or a Vaishnava, he cannot progress on the path of spiritual life. So it is very, very important
said here, Vaishnava like Prahlad Maharaj is described here as Nirvaira, having no enemies. Else in the Srimad Bhagavatam it is said, Ajata Shatruva Santa Sadhava Sadhu Bhushana. A devotee has no enemies. He is peaceful, he abides by the scriptures, and he is always immersed in the thoughts of Krishna consciousness. That is the true devotee. We had to introspect ourselves. Where do we stand in relation to the scriptural injunctions? And then see how you have to act in your lives. It is very, very important. Personality of God, despite whatever benediction he may have received from other sources, Hiranyakashipu was certainly enjoying the fruitful results of his austerities. कुछ तपस्या का फल तो मिल जाता है, और वही फल हिरण्यकशिपु पा रहा था, मगर एक सुंदर पुत्र के प्रति उन्होंने अपराध किया तो सब कुछ उनका खत्म हो गया। इसलिए जीवन भर की सब भौतिक उपलब्धियां कुछ काम की नहीं है, और भक्ति में अगर केवल आपने ABCD भी सीख लिया, उसका कभी विनाश नहीं होता। प्रमतः लोग जो है, जो पागल लोग हैं, वो केवल भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने में अपने जीवन के, इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर देते। वो भक्ति के उच्चतम शिखर पर नहीं आ पाते, या सदगुरु के आश्रय में नहीं आ पाते। वो ऐसे ही गुरु के पास जाते हैं जिनको वो थोड़ी थोड़ी सी उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धियां कराते हैं। उन उपलब्धियों के अंतर्गत वो सोच रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, मगर वो आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। वो संसार में गोल गोल घूम रहे हैं, भ्रमर की तरह घूम रहे हैं, मगर उनको लगता है कि वो चल रहे हैं, मगर वो भ्रमर की तरह घूम रहे हैं। This is the influence of a Maya on a person who is not thinking what is Krishna consciousness, what is demigod worship, and what is Vaishnava Acharya shelter. They cannot understand. They feel everything is same. सब कुछ एक ही है। साईं बाबा के मंदिर में चले जाओ, सब एक ही है। हाँ? So this is nonsense. In the name of religion, especially in India, people become completely blind. मंदिरों में जाइए, घरों में जाइए, लोगों के पास जहां पर कृष्ण का जगह रखा हुआ, फोटोग्राफ रखा, उसके साथ में साईं बाबा को भी रख दिया। उनको ये भी मति में मालूम नहीं है कि कृष्ण को कहां रखना है, गुरु का कहां पिक्चर रखना है, देवी का क्या स्थान है, कुछ मालूम नहीं। सब भगवान एक ही है, सब भगवान एक ही है। जिनको चेतना में अशुद्धि होने के कारण, जीवन में अज्ञानता के कारण, जीवन में कोई संग के कारण ऐसी बुद्धि उनकी हो गई है जो वास्तविकता में राक्षस से भी कम है। इसीलिए दिव्य श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने से हमें पूरा पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है। Supreme Personality of God, despite whatever benedictions he may have received from other sources, Hiranyakashipu was certainly enjoying the results of his austerities. But here the Lord says that as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, he would be ruined. One's longevity, क्या-क्या होता है, ध्यान से सुनिए। One's longevity, opulence, beauty, education, and whatever else one may possess as a result of pious activities cannot protect one if one commits an offense at the lotus feet of a Vaishnava. जो भी तुम्हारे पास में होगा वो सब खत्म होएगा। लेटेस्ट सुनो, क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये एक बार भक्ति में बैठ गया, हरे कृष्ण लैंड प्रभुपाद जी ने देखा, उन्होंने भगवान को प्रॉमिस कर दिया कि मैं भगवान तुम्हारे लिए यहां पर एक अच्छा मंदिर बना दूंगा।
किसने प्रॉमिस किया? आपने नहीं। आपने जो प्रॉमिस किया अभी बन ही नहीं रहा है। मगर जो प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया 5 साल में बना दिया। हम कितने पवित्र हैं, प्रभुपाद जी कितने पवित्र हैं? हाँ, उन्होंने 5-6 साल में पूरा इतना बड़ा मंदिर बना दिया। 72 में और 77 में उसका उद्घाटन हो गया। हाँ? जो मिस्टर नायर था उसको प्रलोभन आ गया। उन्होंने पहले प्रभुपाद जी को बोला था कि हम आपको ले यहां पर दे देंगे, तो 19.5 लाख रुपए में उन्होंने लैंड उस वक्त दे दिया। अगर फिर बाद में कोई कॉर्पोरेटर आया, बोले अरे आप स्वामी जी को ये लैंड क्यों दे रहे हो? मैं तो आपको 5 स्टार होटल बनाने के लिए एक पार्टी को लाया हूं, वो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा। क्या समझ रहे हैं कि नहीं? तो नायर उछल गया प्रलोभन में। भौतिक संसार का व्यक्ति क्या होता है? भौतिक मदरा पी पी के अपने जीवन को सड़ा रहा है, तो वो कैसे आचार्य को समझ सकेगा? बोला हमको तो पैसा मिल रहा है, स्वामी जी का जो मैंने किया छोड़ दो छोड़ दो। और प्रभुपाद जी समझ गए कि ये जो नायर जो है ये अपने दिया हुआ वचन से फिरेगा। तो उन्होंने गिरिराज महाराज को वार्न कर दिया, ये सतर्क रहो, ये जो है ये गलत आदमी है। हम लोगों को कंप्लीटली इसको रजिस्टर करना पड़ेगा पेपर वगैरह को, नहीं तो वो कभी भी पलट सकता। और यही हुआ, वो पलट रहा था, क्योंकि भौतिक संसार वाला जीव कभी युग आचार्य को नहीं समझ सकता, वो साधु को नहीं समझ सकता, उनकी प्रक्रिया को नहीं समझ सकता। मगर उसको सिर्फ प्रलोभन याद आ रहा था, पैसा। संसारी व्यक्ति को पैसा बहुत प्यारा है, उसको सब कुछ करो मगर पैसा मत छीनो उससे। हम लोग जाते हैं ना संसारी व्यक्तियों के पास में, उनसे बोलते हैं प्रभु जी मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा डोनेशन दीजिए। हाँ मेरे पास तो है नहीं प्रभु जी, मेरे पास है नहीं, डिमोनेटाइजेशन हो गया, अभी वो मोदी जी का अभी इलेक्शन चल रहा है उसमें भी चला जाता है। कितने बहाने हैं असाधु व्यक्ति को बताने के लिए, मगर साधु का एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे मंदिर बनाएं, ठाकुर जी के कैसे प्रचार करें। उनके पास तो ना करने की जरूरत, मगर बेटी का शब शादी होता है 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। जब साधु जाता है, कुछ नहीं है प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम आ जाइए। और पता चला अपने बेटी पे शादी पे खर्चा कर दिया 50 करोड़ रुपया, 6 महीने के बाद में तलाक। 6 महीने के बाद तलाक। क्या हो गया? बेटी वापस आ गई घर पे कि बना नहीं स्वामी जी, क्या करें अभी, क्या करें? अरे रास्कल, you don't have a consciousness of protecting your dharma or protecting your own life. And how can you protect? By giving alms or spending money on a marriage. And how can you promise that their life will be very progressive? It cannot. You are doing in a 5-star hotel, a brothel place, sinful place, meat eating, gambling, intoxication, illicit sex is happening all these places, and you want to see that, you want to marry your child there, and you think the results will be good. The results will not be good, because you are entering into a den of a Kali personified, and then thinks everything will be all right. मैंने तो ब्राह्मण को दे दिया, मैंने कितने दिया? 15,000 रुपया दे दिया। शादी पर कितना खर्च किया? 10 करोड़, 15 करोड़। याद क्या रहता है उसको? मैंने वो पुजारी को दिया 10,000 रुपया।
दारू कितना पिलाया लोगों को वो नहीं याद रहा. दिस इज द बिगेस्ट रास्कलडम ऑफ द हिंदूज. आई एम टेलिंग यू, द सो कॉल्ड हिंदूज. सो अंडर दिस होल डिमोनिक चिंतन, you cannot become a better devotee. A better devotee is who has given up his interests, personal interests, and surrendered to a great acharya. That's why it is said, and a less intelligent person who are always busy worshipping the demigods should not note that when the demigods are harassed by the demons, even devatas go to supreme personality of Godhead. जब देवता लोग भी डर जाते हैं राक्षसों से, वो किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, फरियाद करने जाते हैं, हमको बचाइए. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि अगर आप ये सब जानते हुए हो तो फिर आप भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते? It is very important for a devotee to surrender to the supreme personality of Godhead rather than worshipping the demigods. Akam sarva kamo va moksha kama udarade tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. चाहे तुम्हारे पास भौतिक कामनाएं हो या कामना के बगैर हो, मगर किसी भी तरीके से तुम ठाकुर जी को भजो, राधा मदन मोहन जी को भजो. आपको भौतिक स्थानों में देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है. Prabhupada ji is very clearly saying, whether you are a karmi, whether you are a jnani or a yogi, you must connect with Krishna, the supreme personality of Godhead. And even if he is material, if it is material, one should approach the Supreme Lord and pray to him, and then it will be fulfilled. There is no need to approach any demigod separately. प्रभुपाद जी अपने वक्तों में बता रहे हैं कि आपको देवी देवता के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है. भगवान श्री कृष्ण की आराधना में सब कुछ है. चाहे तुम्हारे पास इच्छाएं हैं तो ठाकुर जी के पास जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं है तब भी ठाकुर जी के पास जाओ. तुम्हारे सभी इच्छाएं पूर्ति कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिकम ए बेटर डिवोटी. और जो संपूर्ण भक्त बन जाता है उस व्यक्ति को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है. It is said, association for progressing on the path of spiritual life is very, very important. Now we are glorifying here Prahlad Maharaj and we are hearing Prahlad Maharaj teaching, but at core we have to understand how he took an association of a devotee. That's how the demon completely changed. So in some other places, also it is mentioned in the Srimad Bhagavatam, first canto, 18th chapter, that what is the importance of the Sangha association. Tulyamalavena न स्वर्गम न पुनर्भवाम भगवत संगी संगस्य माल्यनाम किम उतासिधा. द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट. ध्यान से सुनिए आपको मालूम नहीं है कि एक मिनट भी अगर आप शुद्ध भक्त के साथ संग करेंगे तो आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा. पीछे हम लोग एकादशी पास किए तो वहां पर प्रसंग चल रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार उल्टा डंगा में अपने गुरुजी से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, तो कुछ समय बैठने से ही
प्रभुपाद जी का मस्तिष्क कंप्लीटली हिल गया। जो कि फ्रीडम फाइटर थे वो माया के फाइटर बन गए। समझे कि नहीं? माया के फाइटर बन गए, फ्रीडम फाइटर छोड़ दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आश्रय लिया। ये है इफेक्ट ऑफ मोमेंट्स। The value of a moment's association with a devotee of the Lord cannot be compared even with the value of attaining the heavenly planets. Heavenly planets मतलब स्वर्ग से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई। अगर तुम्हें शुद्ध भक्त का संग हुआ, आप बोलोगे कि मेरे को स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है? मगर अगर शुद्ध भक्त के संग में आ गए, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और क्या होगा? All liberation from a matter, or what to speak of a worldly benedictions in the form of a material prosperity, which are for those who are meant for death. ये भौतिक संपदा उनके लिए अनिवार्य है जो मरते हैं। मतलब भक्त कभी मरता नहीं है। प्रहलाद महाराज का प्रसंग हम लोग कलयुग में पढ़ रहे हैं, और कब हुआ? सतयुग में। तो भक्त कभी मरता नहीं है। मगर भौतिक व्यक्ति जो है, जो भौतिक संसार के कार्यों में लिप्त है और भौतिक वस्तु को प्राप्त करने में बिजी है, वो मरता है। ऐसे मरने से क्या अच्छा है कि हमें क्षण भर के लिए एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो सके। ये शास्त्र कहते हैं। साधु संग लब मात्र है। साधु संग सर्वशास्त्र के श्रीमद् भागवतम बता रहा, लब मात्र, 1 सेकंड का 60वां पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लव। लव मात्र संग करे, सर्व सिद्धि हो। Just a moment's association with the transcendentalist can transform your life, and you can develop the taste of Krishna consciousness. That is the potency of a great acharya. That is the potency of an association. My dear friends, hanker for a better association. My dear listeners, hanker for a better association. Then you can progress on the path of spiritual life. तिरक्षिता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्त हतापि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि. The devotee of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. This is Samakrishi is telling to the Supreme Personality of Godhead. This is the quality of a devotee. वो अपने आप को दुख में डाल के, तकलीफ में डाल के, लोगों के हित के लिए अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अगर विदेश नहीं गए होते, 1 महीने की जर्नी करके विदेश में नहीं गए होते, जहाज मालवाहक जहाज में, आप और हम यहां पर श्रीमद् भागवतम सुनते नहीं होते। ये उनका अथक प्रयास, तपस्या का बल, वृंदावन में वास, श्रीमद् भागवतम को कवर टू कवर ट्रांसलेट करना, हम जैसे मूढ़मतियों के लिए उन्होंने हमें इस संसार में उभारने के लिए एक बहुत प्रयास किया है। और इस प्रयास में हर व्यक्ति सफल हो सकता है, केवल उसे यही करना है, सेवन मुखे ही जीवा दो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। जो सतयुग में हजारों साल तक नहीं उपलब्ध होता है, वो कलयुग में आपको चैतन्य महाप्रभु आसानी से प्रदान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अपने जीवन को सुधार ले, अपने जीवन को सुधार ले और अपने जीवन को उभार ले। हाँ? केवल नाम स्मरण करना। तुम कुछ भी मदिरा पीते हो, कांदा लहसुन खाते हो, खैनी खाते हो, क्या क्या बीमारियां लोगों को आजकल के जमाने में, क्या क्या बीमारियां। जो खैनी बनाने वाला वो मर्सिडीज गाड़ी में जाता और खैनी खाने वाला ठेला ठेलता रहता है, isn't it? क्योंकि उसकी मति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में वो कैसे भगवान कार्य में आ जाएगा? ये केवल महत की कृपा से ही हो सकता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंपैशन ऑफ द डिवोटी। दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी से प्रीचिंग इज द एसेंस। यू कीप जा रहे देखो ताहे को कृष्ण उपदेश, जहां पर जिस व्यक्ति को भी मिलते हो, चाहे वो खैनी खा रहा है, मांस के दुकान में खड़ा है, दारू पी रहा है, दारू के दुकान के बाहर खड़ा रह रहा है, उसको तिरस्कार करो। तुम्हारे तिरस्कार से वो शायद सुधर जाएगा। ये मत सोचो कि उसको जो कर रहा है उसको करने दो। नहीं, जहां पर भी नजर जा रही है वहां पर देख रहा है कोई खैनी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उसको डांटो, उसको सुधारो, उसको प्रेम से समझाओ, क्योंकि कोई उसको समझाने वाला नहीं है। कोई समझाने वाला, आजकल बाप बेटे को नहीं समझाता है, क्योंकि बाप ही गलत है तो बेटा क्या करेगा? पैसा कमाने के लिए बाप जो है क्या क्या नहीं करता, बच्चा कैसे निकलेगा? वो उसका जीवन भी बर्बाद होगा ना। क्या होगा? जिस प्रवृत्ति से ऐसा धन कमाया उस प्रवृत्ति का बच्चा बनेगा। वो प्रहलाद नहीं बनेगा, ध्रुव नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार प्रदान कीजिए और प्रहलाद महाराज के तीव्र शिक्षाओं का रसास्वादन उनकी कराइए, तब जाके उनका जीवन अच्छा हो सकता है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कैन टीच। You see, that's how Vidura is telling to Maitreya Muni, Janasya Krishna Vimukhasya Daivat Adharmashilasya Sudhokshitasya Anugrahe Acharanti Nunam Bhutani Bhavayam Janardanasya. Oh my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. साधु जो है पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को रास्ता दिखाते हैं जो पथ से च्युत हो चुके हैं, अपने जीवन को कष्ट में डाल के लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी। Devotees, see the devotees of the Hare Krishna land here. They're working so hard, going morning till evening, begging the alms for building the temple. How can a materialistic understand what the devotees are doing? They think it's also their way of working in the material world. The full-time devotees get up at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, do their sadhana, they are chanting their holy name, they are doing devotional service. On the top of that, they go out and do bhiksha. Sometimes people give, sometimes people they don't give. Sometimes even people get humiliated. Because of the compassion of the devotees, they keep on preaching.
So this is the actual nature of a true devotee. Srila Prabhupada went into the Western world at the age of 70. Nowhere to go, nowhere to fall back upon. But still he went. Why? Guru Mukha Padma Vakya Chitita Korina Akya. Because his spiritual master told him, you go to the Western countries and preach the message of Bhagavad Dharma. And this is an unflinching faith in a spiritual master. अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा होना ही असली भक्ति है. उन्होंने कभी भूले नहीं. वो 70 वर्ष की आयु में कौन जाता है? गोपाल कृष्ण महाराज अभी आए, 76 ईयर्स 78 ईयर्स के हो गए, अभी इधर थे, कभी वृंदावन में, कभी मीरा रोड में, और अभी कहां? वॉशिंगटन डीसी में पहुंच गए प्रचार करने के लिए. शरीर कष्ट होते हुए भी. और यहां पर हम सब लोग इतने सालों से मंदिर पढ़ रहा है, किसी के दिल में कुछ होता ही नहीं. अरे भाई जन्माष्टमी आ रहा, जाओ भिक्षाटन करो, क्या तकलीफ है? ना ही तो बोलेगा ना, मगर ले आओ, ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण काम करो, कूपन्स ले लो, कलश का फॉर्म्स ले लो, एडवर्टीजमेंट का फॉर्म ले लो, कुछ तो करो. घर बैठे क्या करोगे? कुछ मधुकरी करो भगवान के लिए. मधुकरी भगवान के लिए करोगे तो मधुरता भगवान प्रदान कर देंगे. उस मधुरता में कोई भौतिक रस नहीं होगा, केवल आध्यात्मिक रस होगा. देखो तो सही, एक दिन तो मधुकरी करके देखो, अपना फॉल्स ईगो कितना कम हो जाएगा. तुम जस्ट आस्क. यहां पर मस्जिदें बन रही हैं इंडिया में, हर नुक्कड़ पे मस्जिद बन रही है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है. और मुसलमान क्या करते हैं? हर फ्राइडे को ज़कात देते हैं मुल्ला जी को. हम लोग हिंदू लोग खुद बनाएगा ना भगवान, ये खुद ब खुद बन जाएगा, हमारे को क्या जरूरत है? इसलिए इतना समय लग रहा है इतना मंदिर बनने को. उनसे देखिए, हर दिन हर फ्राइडे को ज़कात देना पड़ता है मुल्ला जी को. और हिंदू को क्या करता है? कुछ नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रहा. So this is what we have to learn, and then only we can become better devotees in our life. And we should more and more, we should put our foot forward to preach. गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम. तुम्हारी जो भगवान की जो लीला है, नाम रूप गुण लीला, जितना आप रिसाइट करोगे, संसार के जीवों को शांति प्राप्त हो जाएगी. और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वही काम करते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं. अभी हमारे अमेवला स्वामी महाराज बांग्लादेश गए थे, इतना गर्मी पड़ रहा था, चले गए वहां पर हर जगह प्रचार करने के. अपने शरीर को कष्ट में डालने के बाद भी प्रचार में जो कार्य करता है, भगवान उसकी रक्षा करता है. प्रभुपाद जी जो अपने जीवन में 70 वर्ष की आयु में विदेश जा रहे थे, 3 हार्ट अटैक आए, मगर भगवान ने बोले आप क्यों डर रहे हो? तो भक्तों को कभी डरना नहीं चाहिए, कोई शर्म नहीं करना चाहिए. भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहे हो सब लोगों, चाहे वो महिलाएं हैं, बिटिया लोग हैं, प्रभु लोग हैं. इस वक्त अभी 1 महीने के बाद में जन्माष्टमी आ रही है, सबके पास जाओ और मधुकरी करो, अपने आप को प्यूरिफाई करो. भिक्षाटन से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, फॉल्स ईगो कम हो जाता है. किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए नहीं कर रहे हो भाई, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने इस धर्म ध्वजा को फहराते रहो. इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, हजारों लाखों लोगों का जीवन सुधर जाएगा यहां पर.
वो सुधर रहा है। आज से 12 साल पहले यहां पर मैंने प्रभुपाद जी को लाया और यहां पर पेड़ के नीचे रखा, उस वक्त आप नहीं थे। तो ये किसने किया? ये गोविंद करा रहा है ना आपको। अट्रैक्ट कौन करा रहा है? गोविंद करा रहा है ना। भक्त लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं ना। उस वक्त पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी की मूर्ति को लाया, ये प्रभुपाद जी को लाया, उस वक्त 110 लोग आ गए थे यहां पर। तो ये जो करा रहा है ईश्वर, ये मिरेकल करा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, मुझको मालूम, आपको नहीं मालूम। आप लोग ने सब ये टेंपल देखा, वो देखा, ये मार्बल का मंदिर देख रहे, कब बनेगा कब बनेगा, मगर यहां पर हमने कहीं कुछ नहीं देखा। ये लैंड जो था 3 मीटर नीचे था, 3 मीटर। 9 एकड़ 3 मीटर फिलअप करने के लिए कितना जान गंवाना पड़ा, आपको मालूम? यू हैव नो क्लू। आज यहां पर बैठ सकते हैं हम लोग। उस वक्त हम लोग जब पहली बार आए, यहां पर बैठने के लिए भी जगह नहीं था। इतना धूप होता था, पेड़ एक था, 2-3 पेड़ थे यहां पर, बस उसके नीचे बैठते थे हम लोग। तो भक्तों ने बहुत तपस्या किया। प्रभु, आप सब लोगों को भी सहायता करना पड़ेगा। जिसको भी जानते हैं उसको बोलो मंदिर बन रहा है यहां पर, उसको हेल्प करना है हमको सबको। अपने पगार में से हर महीना 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना आपका क्षमता है, 50 रुपया भी, 100 रुपया भी, बूंद बूंद से तालाब भरता है। और भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से अभी 125 करोड़ रुपया लग गया इस मंदिर पे। ये किसने दिया? ईश्वर देता है, भगवान देता है, और भक्तों की क्षमता होने के कारण वो सब कर रहा है। और आप भी इस यज्ञ में आहुति प्रदान करें और अपने भक्ति, अपने जीवन को सुधारें। तपस्या, ध्यान, यही हमारे को प्यूरिफाई कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी आसक्ति काट सकता है। यही प्रहलाद महाराज का शिक्षण है। और इसीलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 बेटों में से हिरण्यकशिपु का बेटा जो प्रहलाद था वो अद्भुत था। यहाँ पर क्या शब्द है? परम अद्भुत। अद्भुत तो था ही, मगर परम जहां पर वर्ड आ जाता है, नॉट कंपेरेबल, उसके साथ आप किसी को इक्वल नहीं कर सकते। इज अ परम अद्भुत। So devotee is param adbhuta. Prahlad like devotee is adbhuta, param adbhuta. And we have to also become devotee. If we cannot become adbhuta, if we cannot become param adbhuta, at least we should become devotee. And simple method of chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस तरीके से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं तो कई सालों से आप लोगों को हाथ जोड़ रहा हूं, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कृपा करके। जन्माष्टमी 1 महीने में आ रहा है। इस जन्माष्टमी में भी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं। एटलीस्ट 4-5 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सबको प्रसाद देते हैं, सबको सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है। एटलीस्ट 50 से 60 लाख रुपया खर्च होता है। इसमें सब में थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो थोड़ा सा मंदिर का कार्यक्रम आगे अच्छा बढ़ सकता है। और इस साल हमें मंदिर कंप्लीट करना है। वो तभी हो सकता है आप सब लोग जब जुड़ जाएंगे एक साथ में, तो तब जाके ये कार्य संभव हो सकता है। सो प्लीज, यही मेरा आपसे निवेदन है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मंदिर के साथ जुड़े हैं। आपका एक ईंट भी लग जाएगा तो अपना कुटुंब को आप उद्धार कर सकते हो। दैट इज द पोटेंसी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वंडरफुल टेम्पल। 7 generations बिफोर एंड 7 generations आफ्टरवर्ड्स सबका उद्धार हो जाता है केवल एक मंदिर का निर्माण करने से। ये मैं नहीं बोल रहा है, ये शास्त्र बोल रहे। तो आइए, बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है।
अब इसको इस साल कंप्लीट करना है। बीच में बहुत से प्रॉब्लम, अवरोधक आ गए, डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया, उसके बाद में पैंडेमिक आ गया। तो ये 3, 4, 5 साल तो ऐसे ही निकल गए, मगर फिर भी भक्तों का उत्साह बना रहा, और ये आगे आगे काम चल रहा है। तो प्लीज, आई जस्ट बेग यू ऑल to please help us in accomplishing this project. And by accomplishing this project, you will also accomplish your journey of devotional service under the lotus feet of Shri Radha Madan Mohan. Shri Radha Madan Mohan Bhagavan ki, Nitai Gaur Sundar Bhagavan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Any questions or any comments? Anybody has got any question? किसी के पास कुछ प्रश्न है या प्रस्तावना है या कमेंट है? यस, वैष्णवांगरी प्रभु के द्वारा कुछ प्रस्तावना है। यस। Yes. 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 Yeah. Yes. That is what I was telling Hriday Madhav. You sit down on the Sunday, every nook and corner we should do that. And Prabhupada ji says, you can keep the Kali Yuga at bay if everywhere Nama Sankirtan is going, Bhagavad Katha is going, Prarthana is going, Archana is going. This is what a Yuga Acharya did. Yuga Acharya is doing it. It's happening naturally. Where the best of the Archana is happening. There may be in India so many temples, but it's little question mark whether everywhere the Pancharatri ki Vidhi is happening or not. Whether the Lord is pleased by all 7 prakars of 7 times offering. But Srila Prabhupada set up a big setup here. Why? Because he didn't do something mental speculation. He did everything as per the Shastra. This Thakurji is here. He's getting 7 offerings from morning till evening as per the Pancharatri ki Vidhi. Whether other temples are doing like this, whether they are only the special places for earning the alms, we have to see. So in ISKCON, any deity can be installed when there are proper brahmanas, there are proper offerings happening, then proper the archana is happening from morning till evening, then only the temple is established. So such type of temples are the abode of the Supreme Personality of Godhead. And there, when people come, their heart transforms, their lives transform, their families transform, and they transform themselves. Why? आप ISKCON के पूरे विश्व भर में कभी भी केंद्र में जाते हैं तो लोग क्या गुणगान करते हैं कि आप ये ठाकुर जी को कैसे सजाते हैं, ये ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो बातें कर रहे हैं. Isn't it? आपको बता रहे हैं ना कि नहीं? तो ये है युग आचार्य का जो इस कलयुग को दूर करने का जो तरीका है, शास्त्र के अनुरूप है, वो बताने का. और ऐसे आचार्यों के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित करना है, तन से
मन से और धन से। ये मत सोचिए कि नहीं करना है, तन को भी देना है, मन को भी देना है और धन को भी देना है। जिस दिन तन, मन और धन राधा मदन मोहन जी की सेवा में लग जाएगा, उस दिन आप एक अच्छे भक्त जरूर बनेंगे। मन से मन मना मत भक्तो, तन से अर्चना और धन से मंदिर निर्माण। ये तीनों आप गृहस्थ करेगा तो उसका जीवन उज्जवल बनेगा। तन, मन और धन। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। बोलो आप सब की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।